So hello everyone and welcome to Career Launcher. So in today's class, we are going to discuss the Russia-Ukraine war, which has been in the news for the past 3 years almost, right? And in fact, we have seen the questions being asked in CLAT. In fact, in CLAT 2022, almost we have seen the entire passage was asked in CLAT 2022 from this topic, Russia-Ukraine war. And since it is still in the news, it comes in the news again and again. And that is why I have decided to discuss this. In fact, in today's class, we will discuss the previous year question also of CLAT 2022 so that you can understand which type of questions are asked in the exam. Okay. And we will discuss each and everything because whenever Russia or Ukraine war is in the news, they can ask questions like they have asked about the president, the name of the president, currency, etc. Okay, so they can ask about Russia also. Okay, so that is what we are going to discuss in today's class. So am I audible, visible, everything is fine? If yes, then please write yes in the comments. Is my slide visible? So please write yes if my slide is visible. So let us begin with today's class. So let us begin with the first question. Yes, good evening, Ashnur Kaur. Good evening, Ayush Nasha. Good evening, guys. So the first question is, in the year 2014, Russia captured a dash from Ukraine, which is considered as the beginning of a Russia-Ukraine war. So although we say that the war started in February 2022, the current war which we are witnessing, but many scholars say that no, it is since 2014 we are witnessing Russia-Ukraine war, because at that time Russia had captured important land, a piece of land from Ukraine. And what is that piece of land? Yes, Ayush, Nasha, Arshnur Kaur, you all are right. The right answer is option D, Crimea. Yeah, इसी को लिखते हैं Crimean Peninsula because that is a peninsula. So this is what you should be knowing. So D is the right answer to this question, what you should be knowing. Now, so let me show. So here is India. This is Russia. This is Ukraine. Let me zoom in further. So this is Ukraine. ये Russia की capital Moscow है ना? This is Russia's capital Moscow, and this is Kiev, the capital of Ukraine. ठीक है, ये आप Kiev देख रहे हो. So if you see it carefully, here is Black Sea. So I'm writing it A, B, C, D. You have to tell me that which one is actually Crimea. So I'm highlighting those places. So this I'm writing A, this I'm writing B, this region I am writing C, and this region I am writing D. Please tell me which one is actually, ये वाला B है, ठीक है? Which one is actually Crimea out of A, B, C, D shown in the map? Because you should know the maps also. They can ask questions related with maps. I'm waiting for the response. Yes, Ayush, Nasha, you're right. The right answer is this one. Option B is actually Crimea. Okay, this is Crimea. Okay, so this one is Crimea. Okay, now, so let us move on to the questions that were asked in the exam. So we will discuss the previous set question also, and after that we will discuss the topic and all. So please read the passage. So I'll give you some time. I will give you, let's say 50-60 seconds. Please read the passage. And then from here, the question is there. So and try to answer the question. Passage read karo and answer karo question. So basically, this passage is talking about Russia-Ukraine war, and all. So please read it and then answer me. So Ukraine was part of which country between 1922 to 1991? Yes, Ayush Nasha and Ashnur Kaur both are right. The right answer is USSR, which was also known as Soviet Union. Yes, Soviet Union for Socialist Republic. So D is the right answer to this question. Okay. Yes. Very good. So again, this is Russia. But before 1991, and before 1991, it was actually USSR, which included Russia plus 15 other countries. Okay, so there were 15 other countries. So I'm making a rough sketch. Look, this is the blue one. So आप देख सकते हो ये वाला हिस्सा, this region, and roughly this region. ठीक है? So these two were actually part of USSR.
which became independent in the year 1991. Okay, so that is what you should be knowing. So here is Russia today, and these are the Kazakhstan is there, है ना, Uzbekistan, Turkmenistan, Uzbekistan, आप देख सकते हो, Kyrgyzstan, ठीक है. अगर आप यहाँ पे देखोगे यूक्रेन, है ना, so here was Ukraine, here is Ukraine today. That was also a part of USSR at that time. So USSR, है ना, got collapsed. So 1922 से almost 1990 या 1991 कह सकते हो तक था, है ना, and they were actually succeeded. So these are the today's modern countries and all. Okay, and many of them are actually the former USSR members are now the member of CIS. What is CIS? What is that? What is CIS? Can anyone tell me? So CIS is Commonwealth of Independent States. Okay, देखो मैं बताता हूँ. This is nothing but Commonwealth of Independent States. ठीक है. This is CIS. Now you have to understand one thing, that when I'm saying CIS, it is, these are actually the members are mostly the ex-USSR countries which became independent, है ना. Similar to that, there is a concept called as Commonwealth of Nations, and these are most of the countries are ex-British colony, except two, all are actually former British colonies. And in fact, India is also a part of Commonwealth of Nations. We have conducted Commonwealth Games also. आपने नाम सुना होगा. So I have made a separate video on Commonwealth of Nations. So just search this on YouTube, Commonwealth Nations Career Launcher. You will get this video. Okay, so watch this video. So you have to understand one thing, that actually these are ex-British colonies. These are called as Commonwealth of Nations, and something similar to that is Commonwealth of Independent States. And these are actually, this grouping is of former USSR countries and all. So go and read something about Commonwealth of Independent States in Wikipedia. Okay, so that is the homework. Now let us talk something about Ukraine. So Ukraine के बारे में जान लेना. South में Black Sea है and Sea of Azov है. I will show you. And there are countries, पड़ोसी में Ukraine, Romania, Moldova, Slovakia. These are the countries. The capital is Kyiv, है ना. And there is a river that crosses. उस river का नाम क्या है? That crosses through Ukraine. So ये flag है ना. So these are the things you should know. And it was a part of Soviet Union from 1922 to 1991. ठीक है. While showing it, देखो आपको एक चीज समझना होगा. You have to understand. Yes, 2001 में Commonwealth Games हुआ था. Yes, Ayush Nasha in Delhi it happened. Very good. हाँ, right. So you have to understand. जो मैं बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना. Please listen it carefully. Whatever things are in the news, you should read the Wikipedia page of that, because they ask questions from here directly. So Wikipedia page शुरू के at least 4, 5, 6 paragraph शुरू के जरूर पढ़िएगा. I will show you. This is I will show with the help of a proof. एक तो मैंने आपके सामने दिखा दिया. So when you go to the Ukraine, Wikipedia पे यूक्रेन में सर्च करना आपको मिल जाएगा ये. फिर ये पूछा था ना, ठीक है. So that is what जैसे कीव है, ठीक है. इसमें से और भी चीज पूछा था. I will discuss further whatever the things were asked. So now we'll talk about Commonwealth of Independent States. I've told you. So these are actually countries which were actually the former members of Soviet Union. Okay, so like we have Commonwealth nations who are actually mostly are former British colonies, including England also there. Similar to that, there is Commonwealth of Independent States. Okay. Now let me give you another question. Who is the president of Ukraine? So this was asked in 2022, and if you are reading newspaper, you could have answered, at least eliminated 2 options very easily. What should be the answer? Let me see you can answer or not. देखो कैसे आंसर करना था. When if you are reading newspaper, you could have answered. ये वाला व्लादिमीर जो है ना, वो पुतिन वाला के लिए स्पेलिंग ये यूज करते हैं, व्लादिमीर पुतिन. ठीक है. जो जेलेंस्की लिखते हैं वो ये वाला इस टाइप का लिखते हैं. So B and D you could have eliminated. ठीक है. Now अब इस दोनों में कंफ्यूजन था. Actually the answer was व्लादिमीर ओ जेलेंस्की इनका नाम है. So the right answer is A, option A. So व्लादिमीर ओ जेलेंस्की. ठीक है. अब मैंने आपको क्यों बताया कि यूक्रेन की विकिपीडिया पढ़ते, अगर आप यूक्रेन का विकिपीडिया पढ़ते इसमें नीचे जाते तो यहाँ लिखा हुआ है ना. Okay, I'll show you some more things which were asked from here. यहाँ से जो पूछा गया राइट साइड में यूक्रेन के विकिपीडिया पे राइट साइड में लिखा होता है ना. So they ask questions from here. I'll show you further. ठीक है. ठीक है.
अब देखो, which is the currency of Ukraine? Guilder, zloty, ruble, hryvnia. What is the right answer? This was also mentioned in the Wikipedia page. अगर आपने यूक्रेन के बारे में पढ़ा होता. So that is why I say whatever is in the news, please read the Wikipedia page properly. Initially 4, 5, 6 paragraphs and side में जो लिखा होता है, that you should read. Currency of Ukraine. Anyone? Because this is a previous year question and you should know. I'm very sorry, I haven't got the right answer. That is why I'm saying कि previous year question तो आपको पता होना चाहिए बिल्कुल. So ruble नहीं होगा. Ruble is the currency of Russia. ठीक है. So the right answer here is D, hryvnia. Yes, Ayush, Nasha, you are right. D is the right answer to this question. अगर आप ये सर्च करोगे ना, जैसे गूगल पे जाना, यूक्रेन सर्च करना, तो भी साइड में निकल करके आएगा प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, करेंसी का नाम, हियर इट इज. ठीक है. ये भी विकिपीडिया का शॉर्ट होता है. ये दिस इज अ पार्ट ऑफ विकिपीडिया. ठीक है. या अगर आप जो विकिपीडिया यूक्रेन का जो पढ़ रहे हो ना, ये इसके नीचे जाओगे, साइड में लिखा होता है जैसे लार्जेस्ट सिटी, ग्रुप, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर. इसके नीचे जाना, you will see it is written currency. That is why I'm saying whenever things are in the news, even the question maker checks, reads the Wikipedia. देखिए क्या क्या न्यूज में कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं. That is why you have to think like that. अब imagine करो कि आप क्वेश्चन मेकर हो, you are a question maker and you have to make a question on Russia-Ukraine war. What is the first thing you will see? You will see, you will search on YouTube, you will search on Google Russia-Ukraine war Wikipedia. ये वाला पेज पढ़ोगे. You will search about Russia, Wikipedia. You will search about Ukraine, Wikipedia, and from here you will try to make questions. ऐसे ही होगा ना. क्वेश्चन मेकर कहां से उठाए क्वेश्चन? यही से उठाएगा ज्यादातर केस में. हाँ, it can pick questions from other news article, but this is the easiest one to pick. ठीक है. So ऐसे आपको सोचना होगा एग्जाम में. ठीक है. So that is why I'm saying, even when you are preparing, you have to think like that. Think like the question maker, है ना? So that is what you should be doing. The president of Ukraine was formally, again directly from Wikipedia. इनके first page Wikipedia के first page में लिखा हुआ था ये. Weather forecaster, Navy officer, comedian, TV news reader. So president of Ukraine, Volodymyr Zelensky, was earlier what? बताइए. Anyone? I'm waiting for the response. So the right answer is yes, comedian. C is the right answer. ठीक है. देखो, Volodymyr Zelensky पढ़ो. पहली बात तो उनका विकिपीडिया पे नाम लिखा है. He did law, but he did not pursue it. He pursued in comedy and entertainment. And it is clearly written. Produce films, cartoon, and all. Comedian थी. Yes, the right answer is C. आयुष, नाशा, अर्शनूर कौर, both right. C is the right answer. तो आप देख सकते हैं एकदम सामने. अगर आपने विकिपीडिया पेज पढ़ा होता, एक बार ही पढ़ा होता, तो आपको हिट करता दिमाग में. It would have stuck your mind कि हाँ ये होगा आंसर. Okay. Yes. So this is how you are supposed to prepare for the exam. Okay. Now the next is, which operation was launched by Indian government to bring back Indians from Ukraine in Russia-Ukraine war? And in fact, it was very much in the news. So if you were reading newspaper at that time, you could have easily answered it. But still, I'm expecting you to answer. The right answer is Operation Ganga. So B is the right answer to this question. Okay. So that is what you should know. Carried out by Indian government and to bring back people from Ukraine. Acha, to bring back people from Israel. What is the name of the operation started by India when the war started and all after 7th October 2023? What is the name of the operation started by India? That's called as Operation Ajay. है ना? ये पढ़ लीजिएगा. So these are the things you should know. इसका आंसर B है, Operation Ganga. Yes, Ayush, Nasha, you are right. Please, the right answer. Now, let us talk about the recent war, like which started in February 2022. So the Russia attacked Ukraine in February 2022 for gaining what? Crimea, Donbass, Moldova, Murmansk. What is the right answer? What is the right answer? बताइए. So basically, देखो, मैंने already told you कि A should not be the answer because it had already become the part of Russia in 2014. Murmansk is in Russia, तो ये तो होगा नहीं. Moldova तो होगा नहीं, already separate country. So the right answer is B, Donbass region. ठीक है.
So that is what you should be knowing. B is the right answer to this question. Yes, Ayush Nasha, you are right. And Donbass comprises of two regions. What are those regions? Can you please tell me the two parts? Donbass comprises of X and Y. So what is X and what is Y? Please tell me. Okay, so let me show in the map. So here is Ukraine, this is Russia, ठीक है? और ये यूक्रेन है, ये वाला हिस्सा है ना, somewhere here. This is actually Donbass region. And it comprises of Donetsk and Luhansk. ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ. ये वाला, this one, right one. तो अगर आप गौर से देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा है, this is Luhansk. And नीचे वाला जो हिस्सा है ना, this is Donetsk. ठीक है? And these two together, Donetsk and Luhansk together comprises of Donbass. And to capture this, actually, Russia started war in February 2022. और ये जो था क्रीमिया, they had already captured, है ना? क्रीमिया तो 2014 में already capture कर लिया. But इसमें उतनी violence, इतनी deaths नहीं हुई थी. So क्रीमिया वाले में. But in Donbass, so when the war started, actually many people have died, so that is what you should know. Luhansk and Donetsk is equivalent to Donbass. So this is what you should be knowing. Okay. अच्छा ये river जा रही है ऐसे. What is the name of this river? और इस river पर इसकी capital भी बसा है. So the capital Kyiv, अगर आप देखोगे, is here. Okay. And this river is called as what? Dnieper, D-N-I-E-P-E-R. Dnieper river is there. Okay. So this is what you should be knowing. Okay. And ये वाला क्रीमिया हो गया. Okay. Now, and Donbass region. So D-O-N-B-A-S भी लिखते हैं, B-A-S-S भी लिखते हैं. Okay. Now ये आप भी देख सकते हैं अभी रशिया का इमेज ये वाला कैप्चर्ड है इधर रीजन एंड ऑल. मैं दिखाता हूँ और आई शो द बीबीसी's इमेज आल्सो. ये तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि हाँ ये तो दिखा रहे हैं कि रशियन स्पीकर्स कहाँ रहते हैं. तो यहाँ पे रहते हैं इस सब रीजन में. तो रशियन लैंग्वेज भी बोली जाती है यूक्रेन में. Who is the prime minister of Ukraine currently? Please tell me. And these are the four options. I know it is slightly difficult to pronounce, and that is why I'm not pronouncing. So please read it and then answer me. The prime minister, the current prime minister of Ukraine. देखो president आपको पता है, but maybe they can ask in the exam कि अच्छा आपको president पता है तो मैं prime minister पूछता हूँ. Because very less people know prime minister's name, and that is why I have asked. मैंने थोड़ा देर पहले बताया है. You won't believe I had deliberately when I was highlighting the Wikipedia image page, I had highlighted the answer also. So just watch my class 5-6 minutes back. I had discussed the prime minister of Ukraine is Denis Shmyhal. So B is the right answer to this question. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. Is the prime minister of Ukraine. Now, which of the following is not correct about Ukrainian flag? And these are the options. It is rectangular in shape, contains blue color, yellow color, contains red color. What is the right answer? Not correct about Ukrainian flag. ये सब पता होना चाहिए. Since Russia Ukraine war, it is written in the thumbnail. Yes, the right answer is D. See the thumbnail. Check the thumbnail. The video of the thumbnail has shown the flag. Yes, Hari, you are right. Kumari Bhavna, you are also right. D is the right answer. इस तरह है, blue and yellow rectangular shape है. तो rectangular shape है, blue color है, yellow color है, red color नहीं है ना? So not पूछ रहे. So D is the right answer. Simple. ठीक है. Yes, Ashnur Kaur, you are also right. Mariupol is a city on the coast of which sea? Black Sea, Azov Sea, Sea of Marmara, Mediterranean Sea. ये किसी एग्जाम में पूछा था because at that time Mariupol was in the news. So some famous city of Ukraine was very much in the news, and that is what I'll be discussing. So it is on the coast of which? Anyone? Yes, Azov Sea. B is the right answer. Yes, Kumari Bhavna, you are right. So let me show. So this is Ukraine. This is Black Sea. ये वाली Black Sea. This is Azov Sea. ठीक है. और Sea of Marmara, Mediterranean Sea तो होगा. दो Mediterranean Sea ये वाला है और ये वाला Sea of Marmara है. So उसका तो कोई स्कोप नहीं है ना. So let me zoom this region.
है ना, टू अंडरस्टैंड। ये यूक्रेन है, आप देख रहे हो ये यूक्रेन है। ओके, तो कभी कभी तो यहाँ पर आप देखोगे, हाँ लेट मी ज़ूम इट, तो ये वाला जो है ना ये मारियोपोल है। सो फेमस सिटीज आर, एक तो कीव है, यहाँ पे खारकीव है which became the initial victim of the Russian attack। तो आपको पता होगा अटैक हुआ ऐसे, so Russia attacked Ukraine like this, so it attacked Belarus is the friend of Russia, I hope you are aware, this is a friend of Russia। ओके, तो एक ऐसे करके अटैक किया, और वाटर के जरिए भी ऐसे भी अटैक हुआ है, समथिंग लाइक दैट, थ्रू द वाटर। सो रशिया अटैक्ड एंड हियर इज रशिया, है ना, यूक्रेन थ्रू 3 साइड्स एंड ऑल लाइक दिस। ठीक है ना, अब लेट मी ज़ूम इट, है ना, तो अगर आप देखोगे और से ये वाला हिस्सा आई एम ज़ूमिंग इट, सो इफ यू सी इट केयरफुली, हियर इज मारियोपोल, दिस इज अज़ोव सी, यहाँ पे रोस्टोव देखो, ये बॉर्डर दिख रहा है ना, ये इधर रशिया हो जाएगा ये वाला, है ना, और ये रोस्टोव रशिया का सिटी है। ठीक है, सो दिस इज सेवास्तोपोल, ये क्रीमिया है, क्रीमिया का एक बहुत फेमस पोर्ट सिटी है सेवास्तोपोल। दिस इज खेरसोन ऑफ यूक्रेन, दिस इज ओडेसा ऑफ यूक्रेन, ये सब न्यूज में था, these cities were in the news। so this is Black Sea, I hope you are aware। और ये है ज़ैपोरिजिया, why is ज़ैपोरिजिया so famous, और यहाँ से एक रिवर आ रही है, ये रिवर वही नीपर रिवर जो मैंने बताया, DNIEPER। ठीक है, जो ये वाली रिवर आ रही है ना, दिस इज नीपर रिवर, इट कम्स लाइक दिस, है ना, so here is Kiev, है ना, this is Odessa, and यहाँ पर आपको ज़ैपोरिजिया मिलेगा, यहाँ पे मारियोपोल। ठीक है, and this is Kharkiv which became the initial victim of Russia's attack। okay, so why is Zaporizhia so important, please tell me, anyone? Can anyone tell me? okay, so I'll be asking this question, wait now। अब एक और सवाल है, this is Black Sea and this is Azov Sea। यहाँ पे पतला सा रास्ता है, तो शिप से आप आओगे तो ऐसे जा सकते हो, इट्स अ स्ट्रेट एंड इट कैन रीच टू द रशिया आल्सो, लाइक मारियोपोल भी जा सकते हो, दिस इज मारियोपोल, एंड दिस इज रशिया सिटी ऑफ रोस्टोव। ठीक है, यहाँ पर एक रिवर भी आके गिरती है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, देयर इज अ रिवर व्हिच कम्स लाइक दिस, यहाँ से रिवर आती है डॉन रिवर, और यहाँ के फॉल करती है। सो प्लीज टेल मी दिस स्ट्रेट, इस स्ट्रेट का नाम क्या है which connects Black Sea with Azov Sea, please tell me। ये Azov Sea है ना, ये नीचे वाला Black Sea है ना, so when you're coming this ship can cross this strait, this is called as what is the name of the strait, please tell me, this is very important। this strait is, यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी कर्च, this strait is called as Kerch Strait, that is what you should be knowing। ठीक है, ओके, तो ये सब फेमस सिटीज है, पता होना चाहिए, ओडेसा, खेरसोन, ये सब ब्लैक सी में पड़ेगा, है ना, लेकिन ये मारियोपोल इज इन अज़ोव सी। ठीक है, रोस्टोव रशिया का है, दिस इज रशियाज पोर्ट इन अज़ोव सी। ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो, है ना। अगर आप देखोगे दिस इज यूक्रेन, दिस इज रशिया, तो ये वाला हिस्सा जो है ना, दिस रीजन हैज बीन कैप्चर्ड बाय रशिया। जो मारियोपोल है वो कैप्चर्ड एक तरह से, दिस इज मारियोपोल कंट्रोल्ड बाय रशिया नाउ आफ्टर द वॉर। ओके, रशियन मिलिट्री कंट्रोल इन ऑल, रशियन मिलिट्री एयर बेसिस। ठीक है, ओके, यस, तो आप देख सकते हो कुछ हिस्सा रिकवर भी किया, तो क्रीमिया तो कैप्चर्ड था, है ना, बिफोर इन्वेजन, बिफोर फरवरी 2022 इन्वेजन, फिर मार्च 2022 में रशिया ने इतना हिस्सा कैप्चर कर लिया यूक्रेन का, फिर थोड़ा सा कम होने लगा, ये वापस लिया, खार्किव वाला रीजन वापस ले लिया ना, पर्पल वाला है ना, एंड रीगेन्ड बाय यूक्रेन, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, तो यूक्रेन रीगेन्ड इट, ये वाला हिस्सा भी रीगेन कर लिया, खेरसोन भी, एंड देन नाउ करेंटली दिस इज द सिचुएशन, दिस इज रशियाज कंट्रोल। ठीक है, तो खार्किव को छोड़ा लिया है, सो नाउ इट इज कंट्रोल्ड बाय द यूक्रेन एंड ऑल। हाँ, कर्च स्टेट कहते हैं, यस, कुमारी भावना एंड साकिनोमानी, बोथ आर राइट। ठीक है, so this is the current situation, so let us see what will happen now। Here is the next question, which of the following is the largest nuclear power plant of Europe? Chernobyl, Fukushima, Zaporizhia, Berlin, what is the right answer? बताइए। यस, वेरी गुड, ज़ैपोरिज़िया। बर्लिन तो जर्मनी का कैपिटल, ये तो होगा नहीं,
Chernobyl is also in Ukraine and it had witnessed a disaster in 1996. बहुत फेमस हुआ था ये फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर जापान में ये हुआ था आई थिंक 2011 के आसपास. That was also very much in the news. Yes, Zaporizhia nuclear power plant. Yes, Ashnur, Kaur, Hari, Adrita, Safi, you are right. है ना. Zaporizhia nuclear power plant के बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना. अगर आप देखो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप एंड अमंग 10 लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो यहां से मैं बताता हूं ना कीव नीपर रिवर आती है, तो कीव के ऊपर में समवेयर है आपको मिलेगा चेरनोबिल, बट दिस इज नॉट द लार्जेस्ट वन. और यहाँ पे मिलेगा ज़ैपोरिज़िया, मैंने आपको दिखाया भी था मैप में ज़ैपोरिज़िया. थोड़ा स्पेलिंग देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग ज़ैपोरिज़िया की. ठीक है, ठीक है. ओके, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट is in a process of undergoing decommissioning. यानी अब इसको यूज नहीं किया जाएगा, है ना. That is what you should know. And it had become a victim of यहाँ blast हो गया था अप्रैल 1996 में, Chernobyl nuclear disaster. It is very famous. It is considered as the worst nuclear disaster history. So ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है. Okay. The next one, since we are talking about Crimea, you won't believe even like almost more than 100 or 120, 130 years back also, there was a war for Crimea. That's called as Crimean War. And I'm asking it because sometimes they do ask this type of question. Whatever is in the news, they go in the past and ask about the history as well. So the Crimean War was fought between Russian Empire and the alliance of Ottoman, France, UK, and Sardinia, Piedmont. From which year to which year? कब लड़ाई हुई थी? So for Crimea, they had fought a war called as Crimean War. So the right answer is option B, 1853 to 1856. Yeah, बस एक रफ आइडिया होना चाहिए. So the right answer is B is the right answer. ठीक है. Okay, so Crimea is so important strategically because यहाँ से आपको आराम से शिप जा सकती है कहीं भी. So that is why this is very very important. It is considered as important. है ना. तो अगर आपको यूक्रेन से जाना है तो you have to cross Bosphorus Strait, then Mediterranean Sea, say you can go to Strait of Gibraltar crossing and go somewhere anywhere else. है ना, ये Strait of Gibraltar कहते हैं. I hope you are aware. Okay, the next is who is the Prime Minister of Russia? And these are options. Yes, Safi Namani, you're right. Mikhail Mishustin. Please do not answer option A because he's the president of Russia right now. So गलती से भी जल्दी में A मत कर दीजिएगा आंसर. B is the right answer. Yes, Adrita Das, Hari, Kumari Bhavna, you are right. B is the right answer. और ये I think first Prime Minister if I'm not wrong. So B is the right answer. है ना? ठीक है. Okay. The next one is हाँ आप देख सकते हो and Vladimir Putin is the president of Russia. Which of the following color is not there in Russia's flag? White, green, blue, red. I have just shown you few seconds back. And if you are not able to answer this, I'm very sorry. You should be answering it because few seconds back I have shown this. Yes, Adrita, Hari, Kumari, Bhavna, you are right. The right answer is green. अभी मैंने just दिखाया. ये दिखाया कि नहीं यहाँ पे? ये दिखाया. White, blue, red. है ना? So white, blue, and red. So there is no green. है ना? So the right answer is B. B is the right answer. ठीक है. Okay, है ना. तो थोड़ा सा रशिया के बारे में पढ़ लीजिएगा, है ना. इट इज द लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, है ना. 11 टाइम जोन है उसमें. जैसे इंडिया में बस एक ही टाइम जोन होता है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, बट इन लोग का बहुत सारा है ना. एंड ठीक है. सो मॉस्को इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी. सेकंड लार्जेस्ट इज सेंट पीटर्सबर्ग. ठीक है. इसमें सेंट बाइजेंटाइन एम्पायर का भी अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ दैट एंड ऑल. ठीक है. ओके, तो ये रशिया है. कुछ हिस्सा, दिस इज यूरोप. आई होप यू आर अवेयर. दिस इज यूरोप. So कुछ हिस्सा where Moscow lies, these all are part of Europe. So 20-30% of Russia and the rest Russia is actually in Asia's part. ठीक है. और यहाँ पे जो बीच में बॉर्डर बनता है उसको कहते हैं उरल माउंटेन्स. So एक तरह से उरल माउंटेन्स acts as the border between roughly between Europe and you can say Asia and all. ठीक है. But Russia पूरा इतना है, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा, इतना हिस्सा यूरोप में है and the rest हिस्सा जो है, rest part is in Asia. Okay. So the Moscow, which is the capital, it is there. है ना, यहाँ पे. Sorry, Asia लिख दिया. Moscow. which is in the Europe region.
ओके, सो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, प्लीज रीड अबाउट इट, है ना. क्रीमियन वॉर, इट हैड इश्यूज विद जॉर्जिया आल्सो इन 2008. जॉर्जिया यहाँ पे पड़ेगी, यहाँ पे समवेयर यू विल फाइंड जॉर्जिया हियर, है ना. सो जॉर्जिया से कुछ रशिया का इशू हुआ था, ठीक है. सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट, है ना. एंड वन मोर थिंग यू शुड बी नोइंग, व्हेन इन क्रीमिया, when Crimea was captured by Russia in 2014, it was expelled from a very famous group. What is that group called? एक बहुत फेमस ग्रुपिंग है, उससे रशिया को एक्सपेल कर दिया गया था. उस ग्रुपिंग का नाम क्या है? प्लीज टेल मी, व्हाट इज दैट ग्रुपिंग कॉल्ड? बताइए. Yes, very good. So at that time it was called as G8 and Russia was expelled. Again it became G7. ठीक है. Yes, सैफे जोमानी, आप G8 लिखो तो ज्यादा अच्छा है, because टाइम में G8 कहलाता था, but okay fine, G7 भी लिख सकते हो. It depends upon whatever the question is. मैंने एक क्वेश्चन वीडियो बनाया है लास्ट ईयर G7 समिट पर, ऑल अबाउट G7 करियर लॉन्चर सर्च, यू विल गेट दिस वीडियो, ठीक है. सो बस नाउ विल बी हैविंग दिस ईयर, व्हेनेवर विल बी हैविंग a G7 summit, we'll be having a video, but this is still helpful because we have discussed a lot of static portion here इसी में, तो हेल्पफुल होगा. तो आप जाके देख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. G8-1 G7, वेरी गुड, हाँ ग्रेट, ठीक है. फिर स्टिल इट्स अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है. G20, SCO, ब्रिक्स, SMA है, WTO, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स है ना, CSTO, एंड देयर आर अदर ऑर्गेनाइज ग्रुपिंग्स आल्सो, है ना. इट हैज 32 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है. सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है. प्रेसिडेंट इज व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर इज मिखाइल मिशुस्तिन, ठीक है. डूमा जो होता है लोअर हाउस को कहते हैं, और अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल कहते हैं. ओके, सो दीस आर द थिंग्स. 65% आर रशियंस, क्रिश्चियंस एंड ऑल, ठीक है. और एक और टर्म जो कि एक्चुअली यूज किया जाता है इन द न्यूज़पेपर्स अक्रॉस द डिफरेंट न्यूज़पेपर इज क्रेमलिन वर्ड लिखा आता है. सो रशियन प्रेसिडेंट हाउस को क्रेमलिन कई बार लिखा आता है, या एक्चुअली यहाँ पर मॉस्कोवा रिवर भी, सो क्रेमलिन करके रेफर किया जाता है फॉरेन पॉलिसी में. क्रेमलिन वांट्स टू डू दिस, मतलब क्या, रशिया और रशियन प्रेसिडेंट. एंड उसके बगल में एक रिवर भी है, दैट्स कॉल्ड एज मॉस्कोवा रिवर. बट व्हाई इज दैट मॉस्कोवा रिवर सो इंपॉर्टेंट? कोई बता सकता है? इट हैज सम लिंक विद इंडिया, कुछ इसका इंडिया से लिंक है. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू टेल मी. मॉस्को रिवर है ना, और ये जो क्रेमलिन है इस पर एक मॉस्कोवा रिवर है ना. देखो यार, इसके बगल में जो रिवर है मॉस्कोवा रिवर इन मॉस्को, है ना. एंड दिस इज क्रेमलिन, द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. व्हाई इज मॉस्कोवा? हैव यू हर्ड दिस कॉल्ड एज ब्रह्मोस मिसाइल? BRAHM capital, because this is Moskova river से नाम लिया गया, which is in Russia, and this is from Brahmaputra, which is actually a river in India, ठीक है. Okay, and that is why it is important. You should understand that BrahMos is a missile which is made with the help of India and Russia together, right? And that is why मैं इसे भी पूछ रहा था कि मॉस्कोवा रिवर बताइए आप, ठीक है. BrahMos accept, and we have recently exported BrahMos to Philippines, planning to export to Indonesia as well, है ना. Philippines को already export किया है ना. So that is what you should know. What is Russia's currency? ये मैंने डिस्कस कराया था थोड़ा देर पहले. रूबल, रुपया, क्लैट, न्यू शेकल. What is the right answer? रशिया की करेंसी क्या है? Some people had said when I was asking about Ukraine's currency, तो लोगों ने रूबल बता दिया था, but रूबल is Russia's currency, मैंने उसी वक्त बोला था. Yes, Safi Nomani and Kumari Bhavna, you both are right. A is the right answer. रुपया जो है कहाँ की करेंसी? इंडोनेशिया, है ना. क्यात म्यांमार, और न्यू शेकल जो है वो इजरायली करेंसी है ना. So the right answer is A, ठीक है. रशियन रूबल कहते हैं, कभी कभी ROUBL भी लिखते हैं, बट रूपी रूबल अग्रीमेंट भी होता है. रूपी रूबल अग्रीमेंट पढ़िएगा इसको. व्हाट इज दैट? सो विल डू ट्रेड विद रशिया नॉट इन डॉलर्स बट इन रूपी रूबल एक्सचेंज, ठीक है. सो ये पता होना चाहिए. ओके, द कैपिटल ऑफ रशिया इज मॉस्को, ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिटीज, ठीक है. जैसे मैं एक मुरमांस्क बता रहा था, मुरमांस्क समवेयर है ऊपर में कहीं पे मिलेगा, मुरमांस्क, ठीक है. फिर एक और है एकदम यहाँ पर, ये साउथ कोरिया देख रहे हो, नॉर्थ कोरिया, ये इनके है नॉर्थ कोरिया. इसके बगल में रशिया की एक सिटी है व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक. इसके बारे में पढ़िएगा. यहाँ पर ईस्ट एशिया समिट, ईस्ट यूरोप समिट करके कुछ होता है, यहाँ पर होता है व्लादिवोस्टोक में.
दैट इज व्हाट यू शुड नो। फिर यहाँ पर मॉस्को है द कैपिटल ऑफ रशिया, और यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह सेंट पीटर्सबर्ग। व्हाई सेंट पीटर्सबर्ग सो इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहाँ से ना आप शिप से जा सकते हो, ये वाला ऐसा शिप से निकल के यहाँ, ठीक है। यहाँ पे देखो सेंट पीटर्सबर्ग देख रहे हो ऑफ रशिया, ये बॉर्डर है ना, ये मॉस्को है। तो यहाँ से शिप चलती है बाल्टिक सी होकर के, आप डेनमार्क से ऐसे निकल करके नॉर्वे, ये पूरी दुनिया घूम सकते हो। यू कैन गो लाइक दैट। दैट इज व्हाई सेंट पीटर्सबर्ग इज अ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस इन ऑल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ सी है, ये बाल्टिक सी है, ठीक है। ओके और व्लादिवोस्टॉक मैंने दिखा दिया, ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, एनके आई एम राइटिंग, और इसके बगल में यहाँ पे व्लादिवोस्टॉक। ये भी बहुत फेमस पोर्ट सिटी है जापान का, इट्स अ वेरी फेमस पोर्ट सिटी ऑफ जापान। और ये मैंने बता दिया मुरमांस्क, ये ऊपर में यहाँ पे कहीं पे रफली शायद यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे नॉर्थ में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू शुड बी नोइंग। नाउ देयर इज अ होमवर्क। Since right now that we have seen elections in Delhi and we have seen the election results as well, so here are two questions you have to find out and answer me in the comment section. So the first is who was the first chief minister of Delhi? Okay. दूसरा है Russian Revolution, in which year it happened and who was the main leader? The third question is जो दिल्ली का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उसके लिए which article of the constitution deals with that and which amendment brought this? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये कॉन्सेप्ट लाया था, ठीक है। the concept of having the chief ministers and legislative assembly and the current power setup is derived from which constitutional amendment of Delhi and which article of the constitution deals with that, ठीक है। yes कुछ लोगों ने अभी आंसर कर दिया है, but I am expecting this that after the class is over you will be provided a recorded video and there will be a comment section on that recorded video। तो आपको A1 A2 A3 करके उसमें आंसर करना है, तीनों एक ही कमेंट में, एक कमेंट टाइप कीजिएगा, उसमें A1 A2 A3 तीनों आंसर लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।